Google Hackathon. Basically, it's just like a small hackathon and Google Girl Hackathon, if you know about this. So, wait a second. I will tell you all the answers, but first let me start with solution challenge. So, what is solution challenge? It is Google Hackathon, and tomorrow, which is 6th of April, is last date of submitting projects. And I think everyone made their prototype. I guess so. If not, then you can submit tomorrow as well. So. Uh, After submitting project successfully, they gonna shortlist your project, and after that, if you come under top 100, then they will organize a virtual mentorship program in which they will tell you about some technology, how you can improve your prototype and project overall for scalability and for good coding. And after that, they will finalize top 10 team for the finale, and finale is going to be in July, as you can see in on my screen. And most probably, finale is going to happen in Google Office in Bangalore. So let's jump into the prizes. So for winner, the prize money is 2 lakh, and for first runner up, it is 1.5 lakh, and for second runner up, it is 1 lakh and 25,000. And there is some special category as well. If they like your project, they will provide you 75,000 money. So uh, I already told you this. So yeah, most of the people ask me कि कैसे evaluation होगा. So basically your technical के basis पे 40% है, in which वो क्या देखेंगे कि how well your code is written and how efficient it is. Is it maintainable or scalable or reliable or not? Because basically main motive होता है hackathon का कि वो कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट को स्केल कर सके, बिकॉज मार्केट में लाना है उन्हें वो प्रोजेक्ट, इसलिए वो हैकाथॉन के थ्रू ये सब कंडक्ट करवाते हैं. देन यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे 10%, बिकॉज जब तक यूजर ही उसे यूज नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो कुछ पर्पस नहीं अगर वो यूजर के पेन पॉइंट को सॉल्व नहीं कर रहा है. अदर देन दिस इज अलाइनमेंट विद कॉज ऑब्वियसली, एंड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. तो ऐसा ना हो कि वो ऑलरेडी मेड हो, लाइक ऐसा होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले से ही बने हुए होते हैं, एंड उसमें ही हम कुछ इनोवेट कर देते हैं या कुछ रिफाइनमेंट कर देते हैं. सो वो इनोवेशन के अंदर काउंट नहीं होता, लाइक इट शुड बी क्रिएटिव, राइट. तो इसके बेसिस पे भी है. साथ में कुछ यूएसपी होना चाहिए. यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन तुम्हारे प्रोजेक्ट का. एंड अगर ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो ये कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंस बना रहा है, कैसे ये अलग है. तो इसके बेसिस पे मार्केटिंग होगी, मार्किंग होगी, सॉरी. एंड अदर देन दिस कुछ रिवॉर्ड्स हैं, लाइक सर्टिफिकेशन होगा पार्टिसिपेशन का अगर तुमने प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सबमिट किया है, अगर टॉप 100 में आए हो, एंड अगर टॉप 10 में आए हो. And other than this, we also giving some facts, which is secret facts, and वो हम अपने साइट से provide कर रहे हैं for the first 16 successful submission. So you can submit your project now, because कल लास्ट डेट है. तो समटाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा अगर ट्रैफिक आ जाता है तो वो शट भी कर देता है. तो लेट्स डाइव इनटू हाउ यू नीड टू सबमिट योर प्रोजेक्ट. तो ये लिंक आई थिंक सो अगर रजिस्टर किया है तुमने तो सबके पास ईमेल पे आ रही होगी. तो यहाँ पे सबमिशन पे क्लिक करना है जस्ट, एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इंस्ट्रक्शन, ये पूरे पढ़ सकते हो. एंड फर्स्ट पेज पे गाइडलाइन है पूरी. सो लेट एंड सेकेंड पेज पे तुम्हें थोड़ी इन्फो देनी है, टीम नेम, टीम लीड नेम एक्सेट्रा. तो लेट्स जंप टू थर्ड. तो इसमें हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कि हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या.
और कैसे हमने इस प्रॉब्लम को ढूंढा, लाइक फॉर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल थोड़े से देना है, एंड तुमने इसके लिए सॉल्यूशन बनाया क्या है, लाइक वो सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्व कर रहा है किसी की प्रॉब्लम और नहीं। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बताना है। सेकेंड, अपॉर्चुनिटी वाई कि कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है एग्जिस्टिंग आइडियाज से, यूएसपी क्या है, एंड ये सॉल्व कर कैसे रहा है यूजर के पेन पॉइंट को। देन उसके बाद फीचर्स तुम्हें ऐड करने, कौन कौन से फीचर तुम लोग प्रोवाइड कर रहे हो अपने प्रोटोटाइप में। देन यूज केस में तुम जनरली अपना यूजर जर्नी ऐड कर सकते हो कि फर्स्ट साइन अप करेगा यूजर, देन वो होम पेज पे आएगा, देन ये फीचर पे क्लिक करेगा। तो इसका पूरा यूजर फ्लो देख सकते हो तुम, विम्सिकल पे तुम यूजर फ्लो बना सकते हो। After that, wireframe. Wireframe is nothing, just sketch about your prototype. तुम इवन ये पेन पेपर लेके भी बना सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज करना है, एक सिग्मा यूज करके तुम्हें बहुत सुंदर प्रोटोटाइप बनाना है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग स्किल शो करनी है, नहीं। तुम बस अपना स्ट्रक्चर उन्हें बता दो कि ऐसे हमारे फीचर्स दिखेंगे। एंड उसके बाद आर्किटेक्चर आता है। आर्किटेक्चर में बेसिकली यू हैव टू टेल देम कि तुमने अगर ये टेक्नोलॉजी यूज की है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, लाइक बाय यू यूज दिस टेक्नोलॉजी। तो आर्किटेक्चर में बेसिकली टेक साइड का रहता है कि हमने अगर ये टेक्नोलॉजी यूज की है तो क्यों यूज की है, लाइक साइन अप के लिए हमने क्या यूज किया, ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज किया। तो ये वो पूरा फ्लो चलता है जस्ट लाइक यूजर फ्लो। बस ये जो फ्लो होता है ये डेवलपर के लिए होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी जो जो तुमने यूज की है वो ऐड कर सकते हो इसमें। थर्ड इज कॉस्ट। वैसे तो ये इन लोगों ने ऑप्शनल रखा है, बट आई विल हाईली रिकमेंड यू कि इसे ऐड करना, बिकॉज इससे एक आइडिया मिल जाता है उन्हें कि इस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू क्या है, और उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये कॉस्ट एक्चुअली सही बैठ रही है कि नहीं प्रोडक्ट के लिए, और ये स्केलेबल है कि नहीं एक्चुअल में। ये सब डिफाइन होता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूजर के लिए, एंड कि ज़्यादा यूजर आ पाए, कितना ये अंडर सर्व एरिया को ऑक्यूपाई कर पाएगा या नहीं। सेकेंड, स्नैपशॉट देना है तुम्हें एमवीपी के। एमवीपी मीन्स मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, विच मीन्स जो सबसे कम चीज़ों में तुम कितना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो उसे कहते हैं, जस्ट लाइक दिस वेबसाइट। तो अगर इसमें ये सारे फीचर्स हटा दें, ये टाइमलाइन है एक्सेट्रा, तो जितने भी मिनिमम फीचर तुम ऐड कर सकते हो इतने कम टाइम में, वो एमवीपी में ऐड करते हैं बेसिकली। एंड फ्यूचर स्कोप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक इसमें तुम ये ऐड कर सकते हो कि फ्यूचर स्कोप क्या है इसका फॉर स्केलेबिलिटी, या फिर फ्यूचर में कौन कौन से रिफाइनमेंट तुम कर सकते हो। लाइक अभी तो बहुत कम टाइम था तो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा, उसकी वजह से, बट फ्यूचर में कितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट कि ये कितना ज़्यादा आगे हम इसको स्केल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी को बेसिकली ये मार्केट में लाना है, इसलिए वो ये सब हैकाथॉन कंडक्ट करवाते हैं। एंड लास्ट स्लाइड इज सारी लिंक्स तुम्हें ऐड करनी है इन सबकी गिटहब की, एंड डेमो वीडियो बनाना है तुम्हें मिनिमम 3 मिनट्स का या मैक्सिमम 3 मिनट्स का, एंड एमवीपी लिंक। एंड एमवीपी लिंक ट्राई करना कि लाइव तुम ऐड कर पाओ। एंड या दैट्स इट। उसके बाद तुम डायरेक्ट वीडियो पे जंप कर सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, एंड बस तुम्हें सबमिट कर देना। Anyone has any doubt, you can ask. We have 4 minutes, and after 4 minutes, Aakriti will join. कितने लोगों ने बना लिया है वैसे प्रोजेक्ट अभी तक? Okay. So, like क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वर्क कर रहे हो बेसिकली, एंड कुछ प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो यू कैन आस्क।
Out of 56 people, no one want to answer. या अगर तुम फ्रेम कर लोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। वो जो भी डेवलपर या जो भी वहाँ पे तुम्हारा इवैल्यूएशन कर रहा है, उसे पता चल जाएगा कि तुम कितनी डीप में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा है तुमने, कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की है। तो वो थोड़ा एज क्रिएट करता है। मतलब हम लोगों ने तो अपने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फाइनल में ये किया था एंड करता है ये बहुत ज़्यादा। आदित्य एक्चुअली रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओवर हो चुका है। मैंने ये ग्रुप पे डाला भी था एंड कल सबमिशन। अनुराग यू कैन लाइक डू वॉइस ओवर एज वेल एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगी। लाइक ओके ओकेश रहेगी बट वॉइस ओवर कर पाओ तुम तो ज़्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। बिकॉज वो समझ जाएंगे कि तुम्हारी स्क्रीन अगर तुम कोई से फीचर पे क्लिक कर रहे हो तो वो क्या वर्क कर रही है। तो वो थोड़ा ज़्यादा एज ऑब्वियसली क्रिएट करेगा। Karandeep, you want to say something? Hi, Sanskrit, I'm already on the call. Thank Oh, you. sorry. Hello, Dee. How are Yeah, you? I'm fine. Thank you so much for inviting me here. It's my pleasure. So, yeah, Shreya, please start. Hello everyone. It's been a while since I last interacted with my juniors. So it feels like really great coming back and speaking to all of you. I would really like to thank Sanskriti and the entire team for inviting me here. It wasn't like long ago when I was there, right where you are sitting and dreaming about all the internships and cool things that I could do while being in college. And yeah, like feeling a little excited, sometimes little nervous about what I would be able to achieve at the end or whether or not I'll get something. But like before deeping dive into my journey, I'll start with my real quick introduction. My name is Akriti, a final year student at LNCPS. I'm currently working as a software engineer intern at Google. Apart from Google, I have also interned at Bloomberg and contributed to Google Summer of Code. I also had offers from Amazon and Tower Research and have a diverse experience of interviewing at various companies like Microsoft, Meta, Rubrik, Cisco, Uber, etc. The list goes on. I hope that I'll be able to provide some valuable insights through this session and help you get a little closer to your achievements or dreams, whatever you want to get in the college. And I hope to keep this session interactive and definitely not turn it into a speech, just me speaking and everyone else getting bored. So I hope I'll succeed in that one. Like talking about that, can I have a quick raise of hands? Like, how many people here are planning on getting internships this summer and are like seriously working, seriously, like putting in efforts and doing something? Oh my God, that's a lot of hands. I can see 11 people. Okay, great, great. So I remember being in your shoes and I looked up to my seniors just like you guys, trying to figure out what path forward should I take.
And oh my God, we have four more hands. Okay, that's a lot of people. So yeah, let's talk about getting the internships. So like getting internships nowadays in big tech firm is very tough, but definitely achievable. And there are a certain like so-called steps or paths that you need to follow, and we'll take a look at them step by step. So what happens is things start with getting your resume shortlisted um, in your dream company, right? So your resume is your very first impression. If your resume is not shortlisted in any company, then it doesn't matter how much of a DSA or development you know, because apparently you will never get to showcase your skills in the real world. So like you should have a resume which is like concise. Ideally, it should be one page in, sorry, it should be one page in length, clean and impactful, and it should have action words like I reduced the latency by 15%, or I led a team of three people. Like it should show that you have really done something, and it was impactful in some ways. And your resume should be tailored for a certain role. So like for example, whenever I apply in any of the company, the roles are mostly SWE or SDE roles. Apart from that, you can also apply in SREs or tech consultants or whatever roles are there, but apparently the chances of your resume getting shortlisted in those roles will be like very low, because what happens is that in the 4 years of duration which we do in our degree, there are only certain parts that we can focus on. If you are focusing on being a data analyst, then your resume would be curated in that way and have things which will be more aligned to that role, and thus your resume can never be shortlisted for a SD position, no matter how much great work you have done for that role. So the things are like, if you are applying for SD role, your resume should highlight your achievements for that particular role. If you want to go for an SRE position, then your resume should have all the like achievements which are directly inclined towards that goal. And of course, you should like definitely get feedback from your seniors and people who are working in that company before applying that. This is my resume. Do you think it will get shortlisted, or are there any improvements that I can do? And apart from resume, it also matters that you are applying to a company earlier. Like, for example, companies like Google are highly competitive, and their roles like close real quickly. Even if the role is not closing, they'll just shortlist. Okay, the first 1,000 applications that we receive, we'll only evaluate that once. So you should like keep an eye on all the career pages of the companies that you are targeting, and you should like apply to them real quick. Like you are seeing an opening, then ask for referrals. So asking for referral also, whenever you are asking for referral on LinkedIn and all, you should like target at least 50 people. So you should like email or send text to at least 50 people from that company, and it should be like real short. Hey, I'm applying for this position at your company. I have so and so achievements. Here is my resume. If you feel like I am good for this role, then please do refer me, kind of things. So if your message is short and concise, then getting a reply, the chances increase like exponentially. So that's one thing. And also, there is this thing that whenever you are applying to a company, if you have like seniors in that company. So, for example, if I'm from 2025 batch, and if I'm applying to Google, if someone is working in Google from my college from 2024 batch or 2023 batch, getting referrals from them will not like really be impactful, because uh, referrals work in a way that if you are taking referral from a person who has like more year of experience in that company, so the referral from that guy matters more. And if someone has like 1 or 2 years of experience, getting a referral from them or not getting a referral from them practically doesn't make any difference. So this is one thing that most of the people are not aware of, and then they take a referral from their seniors, and then they get the rejection emails. So that's one thing that you should be careful of. But another thing which can be really helpful is that if you have seniors from like your college working in that company,
they can give you like really good insights on what the interview process is going to be in depth. You can ask like any question that you have regarding the interview process, what are the criteria that people are going to judge you for, what will be the subjects that will be asked, what will be the level of DSA questions. So, like, seniors, sorry, Akshat, I didn't really understood your question. Can you please unmute yourself and like elaborate it? Hello? Uh, I think he's asking about diversity hiring, ऐसी assumptions हैं कि गूगल गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है हायरिंग के टाइम पे, so I think so he's asking about that. ओके सो अक्षय द थिंग इज कि अगर कोई कंपनी डाइवर्सिटी हायरिंग कर रही होती है तो वो एक्सक्लूसिवली मेंशन करते हैं, जैसे कि अगर इट्स नॉट लाइक दैट, स्टैप इंटर्न्स में लड़के भी शॉर्टलिस्ट होते हैं, लाइक आई हैव सीन इंटर्न्स एट गूगल हु वर शॉर्टलिस्टेड वाया द स्टेप इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड दे आर uh, like it's not a diversity hiring initiative. However, like people think most of the people that get shortlisted are girls, but ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के shortlist नहीं होते हैं. There are boys also who get shortlisted through step intern. It's just that the uh, like chances of that occurring is like less, but it's not like an impossible thing. So like boys can apply to step intern and get shortlisted. So that's a myth. Step intern is a diversity hiring program. तो जो भी कंपनीज डाइवर्सिटी हायरिंग प्रोग्राम्स रखती हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. फॉर एग्जांपल अमेजॉन वाओ का प्रोग्राम होता है, तो दे या विशाल विल कम टू दैट. ओके, लेट मी जस्ट नो इफ दैट इज नॉट answered at the end of the session. Does ATS score matter for shortlisting in big companies? So honestly, I never checked my ATS score in my resume, and like I don't think personally that it matters at all. Maybe opinions will vary for other people, but like as per my opinion, I don't think so. Why? Because like the thing is that uh, so like how I created my resume is that there are some people on LinkedIn who post their resumes. Okay, like hey, I work at Google, and they'll have their resume on their LinkedIn profile. Okay, so you should like like check out their resume and then compare it to yours and look out for like flaws that are present in your resume and improve it that way. So I think that thing really works because अगर उनका resume shortlist हो रहा है और उस resume में ये चार चीजें हैं, तो अगर वो हमारे रेज्यूमे में आ जाएगी तो हमारा भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, राइट? इट्स अ लाइक बेसिक लॉजिक, एंड आई डोंट थिंक एटीएस वगैरह का कुछ रोल होता है शॉर्टलिस्टिंग में. सो या Ma'am, actually there are so many first year students with us. So या what is your advice for them? Like the first step. What will be the first step which they should take? yeah, so like the first step should be, are you targeting a like MNC or do you want to go in startups? Like, do you have your vision clear? Because सबका goal नहीं होता है MNCs में जाने का. Some people are uh, startup people also. और अगर MNC में जाने का goal होता भी है, it should be more concise कि तुम कौन से role के लिए जाना चाहते हो. तुम हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, या फिर सॉफ्टवेयर में भी तुम एसआरई बनना चाहते हो, एसडी बनना चाहते हो. देयर आर लाइक वेरी फाइन ट्यून्ड पाथ्स टू चूज फ्रॉम. So I think first year should be all about, okay, like at least first semester should be all about exploring कि क्या क्या domains हैं, what all work you can do in each of the domain and what do you want to do at the end. Because फिर उसके बाद अगर तुमने एक बार चूज कर लिया तो यू विल हैव टू वर्क डिलीजेंटली 4 years कि उसमें जॉब लग जाए. फिर जॉब लगने के बाद भी तुम्हें सेम वही काम करना है फॉर लाइफ. So I think finding that passion is very important because there will be times when you will not get internships. So like my internships also I got them in the like last fourth semester. So that was like a very patient thing to do, like waiting for like 2 years to get a glimpse of hope. तो कई लोगों का बीच में रुक जाता है. दे वर्क ऑन समथिंग फॉर लाइक 1 semester 2 semester एंड दे आर लाइक इसमें तो कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, एंड देन दे स्विच देयर पाथ्स. तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज एट द एंड यू विल नॉट गेन एनी एक्सपर्टीज इन एनी ऑफ द फील्ड्स. और लास्ट में तो तुम्हारा रिज्यूमे तभी शाइन करेगा जब यू विल हैव like achievements and expertise that no other resume has.
Uh, एंड मैम एक्चुअली आज जैसा आपने बोला कि आपने इंटर्नशिप के लिए जब अप्लाई किया उसके पहले आपने अपनी स्किल्स बिल्डिंग पे फोकस किया होगा ऑब्वियसली सो मैम yeah. what are the correct resources what should be followed. Right. So first of all, though, you should master DSA. By mastering DSA, what questions are you targeting and how many hours you are giving it to it, and what is your approach in solving? All these things also matter because DSA सब लोग कर रहे होते हैं, but to do it in the right way is the actual thing. So there are few things. First of all, though, you should like after covering all the basic data structures and algorithms thing, when your basics are clear, the second thing that comes into picture is practicing. So there are few things. जैसे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन आया कुछ दिमाग में तो लिख दिया, नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लिया. It is like a thing that 90% of the people do. And अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है, they just code it, सारे टेस्ट पास हो गए, ये then they move to the next question. So it's not like that. Patient solve करना तो important होता ही है, but optimization also equally matters because nowadays things are like highly competitive. तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन लाइक सॉल्व हो रहा है बट उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर है, तो उसका सॉल्व होना ना होना सब बराबर है बिकॉज इंटरव्यूअर इज नेवर गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड. अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इवन ऑफ एन स्क्वायर हो रही है तो भी इंटरव्यू विल नेवर बी इम्प्रेस्ड. दे ऑलवेज वांट कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, लॉगरिदमिक हो, कुछ ना कुछ ऐसे हो. तो फर्स्ट थिंग तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होना चाहिए, सिर्फ सॉल्यूशन होना इज नॉट इनफ. सेकेंड ऑफ ऑल की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं. तो अग, अगर तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इट्स लाइक कि तुम्हें सारे सॉल्यूशंस पता होने चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके यूट्यूब पर वीडियोस देखने चाहिए कि अच्छा और लोगों ने कैसे कैसे किया है, या फिर जो सॉल्यूशंस लोग डालते हैं लीड कोड जीएलसी वगैरह पे उसे चेकआउट करना चाहिए. तो लाइक देयर इज दिस थिंग कि सिर्फ काउंट बढ़ाने के पीछे नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं लीड कोड पे 500 क्वेश्चन कर लिए, नाउ वी आर रेडी फॉर ऑल द कंपनीज, कोई भी आ जाए. तो देयर इज दिस थिंग कि भले ही तुम्हारे 200 क्वेश्चन ही हो, बट वो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आने चाहिए कि अगर कोई कल तुमसे इंटरव्यू में पूछ ले तो तुम्हारे पास उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो. एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कुछ लोगों को सॉल्यूशन पता होता है बट दे कैन नॉट कन्वे कि हाउ दे आर डूइंग इट, व्हाट अप्रोच दे आर फॉलोइंग एंड व्हाई दे आर चूजिंग दैट पर्टिकुलर अप्रोच. तो these things matter because eventually लोग सिर्फ एक skilled candidate नहीं ढूंढ रहे हैं, they also want a good team player, a good communicator, so that वो easily काम कर पाए if they choose him as their employee. तो if you are not able to convey your thoughts, मतलब अभी तुम डीएसए प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे हो बट when you will be in internship or job तुम प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर ब्लॉकर्स एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर माइलस्टोन कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे होगे, तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, इट्स अ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर इंजीनियरिंग रोल. And if they'll feel like you are not a good communicator, then eventually they will not want to work with you or have you in your team. So that's also one thing. So like these things matter a lot. So जब भी DSC questions करो तो you should always like speak out your thoughts कि okay we are going to use array because this is the reason for it, and using an array will reduce the time complexity by so and so, and then we will use a for loop, then we'll do this and that. So things like that. एंड लास्टली आई वुड से कि जो भी डीएसए शीट तुम चूज करो मतलब यू शुड चूज अ स्टैंडर्ड डीएसए शीट जैसे कि लव बब्बर की या फिर स्ट्राइवर की. बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक शीट्स हैं क्योंकि ये 500 क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. if you will practice them there will be a very high chance कि इन क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन या फिर इन क्वेश्चंस जैसा कोई क्वेश्चन तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा. एंड इट इज वेरी गुड थिंग क्योंकि अगर इंटरव्यू में तुम बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन देखो जो तुमने आज से पहले कभी देखे ही नहीं है, तो वो 15-20 मिनट में सॉल्व हो जाए, उसके तुम 3-4 अप्रोचेस बता दो, कॉम्प्लेक्सिटी भी कुछ ना आए, ऑप्टिमाइज भी हो, सब कुछ ऐसा होना मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर है. मतलब तुम कुछ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो तो बात अलग है. तो अगर स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स फॉलो करोगे तो देयर विल बी दिस प्रोबेबिलिटी कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल बी फैमिलियर टू यू इन सम वे कि अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन वैसा वैसा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कोई देखा था पहले जो स्लाइडिंग विंडो से हो गया था, तो मे बी इफ आई थिंक इन दैट डायरेक्शन आई विल बी एबल टू क्रैक दिस क्वेश्चन एज वेल. सो दिस इज व्हाट योर आइडियल डीएसए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शुड बी. या एंड मैम आपने जो भी इंटर्नशिप्स किए हैं उसमें मल्टीपल राउंड्स के थ्रू सिलेक्शन होता है, तो जो राउंड्स हैं किसी किसी का ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में ही अटक गए, किसी का सेकंड राउंड में अटक गए, तो कैन यू प्लीज ब्रीफ अबाउट द राउंड्स आल्सो. So like rounds, like they vary a lot, company to company. Like
every company has their own set of like You rounds can that tell need to about happen. Google actually. Yeah, so like for the position that I applied, there were like two DSA coding tests and two interviews and one like two DSA interviews and one HR interview. So and for Bloomberg, there weren't any coding tests for Bloomberg. There were three DSA interviews, one system design interview, one managerial interview, one HR interview. And like it definitely depends company to company, but as a general you can think that there will be two three coding tests, two three DSA interviews. Maybe if the company, like some companies like Bloomberg and Meta, they focus on design rounds as well, so definitely there will be a design round and one manager, sorry, one HR round. So these are like an average thing that you can think of. Okay, we'll need to work on DSA, core subjects, system design, networking, OS, and all. And apart from that, one behavioral round. So that should be a basic plan. Okay, so these are the milestones that I need to cover. Okay, ma'am. And I would like to ask, ma'am, ki after this, do you think that there is somewhere we'll be able to stop? Like we are satisfied. मतलब आपने Uh, yeah, so आपने खुद अचीव कर लिया है. I don't think that there is a need to be satisfied ever. You should always think about becoming a better version of yourself no matter what you achieve. So there is like never a like you should never put a full stop. And even when we are talking of field like engineering, there are always new technologies coming up, new concepts coming up, and if you want to keep yourself up to date with those trends, then you need to regularly learn about them, study about them. So, like I often do this, that there is this portal called Hacker News. They regularly post articles about what's the latest things going on in the tech world. So, like you can give a read to that also, to like just keep a like general awareness about what is happening all around the globe in our domain. So it's good to keep yourself updated. I want to go deep down about like your coding rounds in Google. जब मैंने स्टेप दिया था तो उसमें दो DSA राउंड थे एंड इट इज़ अबाउट लाइक 40 मिनट्स. तो उसमें लाइक गूगल Yeah, डॉक देता है राइट एंड आफ्टर दैट हमें डॉक पे करना पड़ता है. लाइक अभी तो हम VS कोड पे करते हैं तो सब उसमें आ जाता है ऑलरेडी. right. So I want to know about like your whole experience from resume selection to going to Google Office. या सो लाइक मतलब ऐसे कुछ मतलब फील नहीं हुआ कि कोई आईडी यूज करने में या फिर गूगल डॉक यूज करने में बस इसी चीज का चेंज आ जाता है कि वो ऑटो सजेशंस नहीं देंगे, इंडेंटेशंस नहीं देंगे या फिर ऑटोमेटिकली ब्रैकेट्स नहीं देंगे. बट दोज आर लाइक समथिंग टू थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है टू ट्राई इट फॉर द फर्स्ट टाइम. बट like before interviewing you should practice on solving the questions on Google Docs, so it will come as a natural practice to you. because उसमें कुछ ऐसा कोई नया लर्न करने वाली चीज नहीं होती है. It's just you need to change your coding practices a bit कि ठीक है ब्रैकेट्स हम वैसे बंद नहीं करते हैं बिकॉज क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो we'll just close them on our own. तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, बस चार पांच क्वेश्चंस तुम गूगल डॉक पे प्रैक्टिस कर लो तो it will become a natural thing for you. So like 1 or 2 days before interview you can do that. And like yeah, so like my journey was really amazing. So I was working at Bloomberg when I had my Google interview, so I really didn't have much time to prepare for them, and I did not have much hope that I'll get shortlisted. But yeah, so like the offer was really a surprise for me because I never expected that I'll get one. And working at Google is definitely amazing. Like it's a dream come true. All the things like you must have seen Ananta is like trending a lot on LinkedIn, Google's newest office. They have like crazy things over there. They have their own arcade, amazing cuisine, content, food, whatnot. And like, okay, I cannot explain you enough. We'll have to keep an hour-long session of life at Google only. So yeah, but there are a lot of things available on YouTube and all if you are really curious to know. Yeah, I have seen some reels actually. Yeah. Uh, So and yeah, I have like one more question about like do you think जो आपने इंटर्नशिप करी बुक बैंक में वो हेल्प करी गूगल इंटरव्यू में? बिकॉज जब हम इंटर्नशिप करते हैं स्पेशली इन स्टार्टअप एंड समथिंग तो लाइक बहुत yeah, ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते DSA करने के लिए बिकॉज ऐसा मेरे साथ भी होता है.
Yeah. तो उस टाइम पे ऑफकोर्स 6 मंथ तो आपने डीएसए की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो हाउ यू मैनेज दैट? सो द थिंग इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपीरियंसेस सिर्फ रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने तक के पॉइंट पर ही मैटर करते हैं. वंस योर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टेड, तो अब अगला राउंड जो भी होगा उसके रिजल्ट के बेसिस पर ही तुम नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए. एंड सो फोर्थ गोज फॉर ऑल द अपकमिंग राउंड्स. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम किसी को इंटरव्यू में बताओ कि डीएसए का इंटरव्यू है और तुम बोलो कि नहीं मैं तो इस जगह इंटर्नशिप कर चुकी हूँ, तो इसका कुछ फायदा नहीं होगा. ओनली फॉर doing a good DSA and problem solving skill in that particular round, so they will give you some marks कि okay इसका DSA इतना अच्छा है, कोडिंग इतनी अच्छी है, ऑप्टिमाइजेशन आता है, ऐसे ये वो, एंड शॉर्टलिस्ट हर फॉर द नेक्स्ट राउंड. तो और फिर इसके बाद सेकेंडली मैनेजरियल राउंड्स वगैरह में होता है कि ठीक है अगर तुम्हारे पास मतलब अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं रेज्यूमे में, तो उस राउंड में थोड़ा फायदा होता है. बट जो भी डीएसए या फिर सिस्टम डिजाइन सेंट्रिक राउंड्स होते हैं, दे आर टोटली नॉलेज बेस्ड. मतलब तुम्हारे पास पहले जो भी एक्सपीरियंस हो, इट्स नेवर गोना मैटर एट ऑल. So that's one thing. And about managing DSA, like it is really tough, I must say this. But yeah, I just do it on and off. कि ठीक है, अगर time नहीं मिल रहा है तो इस week I'll just do one session for 7 days. Next week अगर free हैं तो फिर ज़्यादा कर लिए ताकि इस week का भी थोड़ा ramp up हो जाए. DSA is all about consistency. मतलब once you have mastered it तो फिर बस practice में रहना होता है कि चीज़ें भूले ना, कुछ नया तो सीखना नहीं होता है. So that way it's easy to manage things. बट मैम अगर कोई मास्टर नहीं है ऑलरेडी, तो कितने क्वेश्चंस उसको एक दिन में मतलब मिनिमम तो करनी ही चाहिए? सी सो देयर इज दिस थिंग कि मतलब सबका अपना अपना कैपेबिलिटी होता है. ऐसे कुछ हार्ड एंड फास्ट हम लोग सब लोगों के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं. तो फॉर मी आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद थिंग्स कि ठीक है, जब मैंने स्टार्टिंग में डीएसए स्टार्ट किया था तो ये था कि आई विल डू 4-5 क्वेश्चंस पर डे. और फिर उसके बाद जब ग्रेजुअली मतलब ऐसा होता है कि अच्छे से आ रहा है, तो अगर तुम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके 1-2 क्वेश्चंस कर लो. रिवीजन के लिए जो पुरानी चीजें कर रखी हैं उसके 3-4 क्वेश्चंस कर लो. And the thing is कि I used to maintain a spreadsheet of all the questions that I was solving, like all the important questions. तो उसमें I used to like just write in short कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे अप्रोच किया था, कैसे कैसे सॉल्व किया था, क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी. तो इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग टाइम टू कोड थिंग्स, बिकॉज कोडिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है कि हम सोचेंगे फिर कोड करेंगे फिर 3-4 एरर्स आएंगे. बट अप्रोच सिर्फ गूगल डॉक में पढ़ लेके अच्छा ऐसे ऐसे किया था ठीक है हो गया, तो उसमें इट्स हार्डली टेकिंग 30 seconds. So it's a good way for revision that worked for me because it was really time saving stuff. ऑल्सो मैम आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि जो आपका साइड वाला पर्सन है वो भी सेम थिंग कर रहा है और आप भी सेम ही चीज़ कर रहे हो. तो हाउ यू हैव केप्ट योर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर दैट कि यू हैव टू डू दिस ओनली? Yeah, I don't. So, like, there's this one thing that you should like totally focus on yourself. Yeah, like I'm telling you, when I was in my first and second year, so I also met people who were like, I know 8 languages, I have won this hackathon, that hackathon. So people were always bragging about what they have accomplished in school or in first year. But you should always target yourself. कि अगर तुमने आज कुछ ज्यादा सीख लिया है कल के कंपैरिजन में, you have made some progress, तो लाइक किसी से कंपेयर करने का कुछ इवेंचुअली बेनिफिट नहीं होने वाला है, एंड इट इज ओनली गोइंग टू गिव यू डिप्रेशन एंड एंजाइटी. सो दैट वे लाइक आई ऑल्सो टॉक टू माई सीनियर्स एंड आई टोल्ड कि हमारी क्लास में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है, आई डोंट नो एनीथिंग. माई सीनियर्स ऑल्सो टोल्ड मी दैट थिंग्स चेंज. जिन लोगों को फर्स्ट ईयर में ज्यादा चीजें आती हैं, नॉर्मली फोर्थ ईयर तक आते आते वो टॉप ऑफ द गेम नहीं रह पाते हैं, और जो लोग रेगुलरली सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दे आउट मैच देम. So this is one thing that my seniors told me back when I was in first year, and I must say that they were right about it. तो मतलब अभी तुम्हें भले ही लग रहा है, बट gradually if you'll practice things with more consistency, hard work, so you will outpass them. And if we are talking about good companies, we are just talking about off-campus opportunities, right? Because college की तो opportunities भी close ही हो जाती हैं. अब जब तुम यस मैम. off-campus चीजों को target कर रहे हो, it means you are competing with like all the people in India, people from IIT, people from maybe different countries. So अगर अगर तुम्हारा गोल ही ऐसे लोगों से कॉम्पीट करना है, तो आई थिंक क्लास के लोग तो फिर मैटर ही नहीं करने चाहिए कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. तो दैट एंड इज आई वन. वांट या एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि डीएसए राउंड में कौन से टॉपिक से प्रॉब्लम्स पूछे थे, इफ यू रिमेम्बर, लाइक कौन सा क्वेश्चन पूछा था? लाइक क्वेश्चन तो नहीं बता सकते वैसे भी, ओके. एंड टॉपिक्स भी आई डोंट लाइक रियली रिमेम्बर. इट्स बीन लाइक
6th 7th months now, but I think that yeah, there was some question around DP. I remember very vaguely in one of the interviews. Like इंटरव्यूज भी ऐसे थे कि बहुत सारी कंपनीज के पैरेलली चल रहे थे, तो अभी ये भी याद नहीं कौन सी वाली कंपनी में क्या पूछा गया था। बट ऐसा कोई बहुत हार्ड टॉपिक नहीं रहते हैं कि तुम ऐसे सोचो, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि ग्राफ में ये अप्लाई कर दो, वो अप्लाई कर दो, बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दो, ऐसे क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यू तुम्हें आधा घंटा देता है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसमें तुम्हें 3 अप्रोचेस बतानी भी हैं, उसमें से एक कोड भी करनी है, थोड़ा बहुत टाइम और भी एज केसेस वगैरह डिस्कस करने हैं, ये सब के लिए रखना है। तुम ये समझो कि तुम्हें कोड करने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिल रहे हैं पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितना ही टफ हो सकता है, अगर इंटरव्यू तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 15 मिनट में सॉल्व हो जाए, तो इट्स नेवर गोइंग टू बी दैट टफ। तो लाइक अगर ऐसा रहता है कि अगर तुमसे कोई एल्गोरिदम टफ पूछी है, उसमें तुम्हें वाला डेटा स्ट्रक्चर आसान होगा, मे बी तुम्हें एरे में डीपी लगाना हो। अगर तुमसे कोई ऐसी एल्गोरिदम नहीं पूछी है, तो मे बी डेटा स्ट्रक्चर टफ दे देंगे कि तुम्हें स्टैक के अंदर कुछ कुछ ऑपरेशन करना है, डीक्यू के अंदर कुछ कुछ ऑपरेशन करना है। तो लाइक आई हैव नेवर फाउंड एनी क्वेश्चन कि जिसमें भाई ग्राफ भी यूज हो रहा हो, डीपी भी यूज हो रहा हो, ये भी हो रहा हो, वो भी हो रहा हो, सब एक ही बार में इंटरव्यू कह रहा हो कि नहीं आज तो तुम सारी स्किल्स दिखा दो एक क्वेश्चन में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई जस्ट थिंक कि मे बी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए ऐसे बोल देते हो कि अरे नहीं बहुत कठिन होती हैं चीजें। बट आई थिंक कि मतलब अगर किसी बिगनर से तुम 15 मिनट में एक्सपेक्ट कर रहे हो चीजें सॉल्व करना, तो दे आर नेवर गोइंग टू बी दैट नेक्स्ट लेवल थिंग। एंड आई ऑल्सो वांट टू आस्क, लाइक कुछ मैंने इंटरव्यूज देखा है तो उन्होंने बोला था कि हम लोग कोड नहीं कर पाए थे, बट वी टेल देम अप्रोच, तो उसके बेसिस पे भी लाइक सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। इट डिपेंड्स ऑन लाइक इंटरव्यूअर। अगर तुम्हारे इंटरव्यू को तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, तो तुम सोल्यूशन नहीं भी दोगे, मे बी दे शॉर्टलिस्ट यू। मे बी अगर उस तुम्हें तुम्हारे अंदर उसमें पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, तो तुम पूरा सोल्यूशन लिख भी दोगे, फिर भी दे माइट फील कि अरे इसने ये वाला एच केस मिस कर दिया था। इट इट इज वेरी सब्जेक्टिव टू कि कौन तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है, और उस कंपनी की हायरिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कि वो लोग कितने लेवल तक लाइक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। इट्स नॉट अ लाइक rigid answer for that one. हेलो जी, Uh, आई हैड वन डाउट। Yeah, मतलब मैंने अभी डीएसए कर तो लिया है, जैसे मतलब डीपी पे मैंने हाइपर फोकस किया क्योंकि वो बन नहीं रही थी, तो आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे जो पहले के टॉपिक हैं एरे स्ट्रिंग एंड बाइनरी सर्च, वो एकदम ऐसे yeah. गायब हो गए हैं। एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसेस देन तो मतलब वो आगे का भूलता जा, मतलब इट्स लाइक आई एम एक एंड पकड़ रही हूँ तो दूसरा सा निकलता जा रहा है, एंड इट्स लिटिल ओवरवेलमिंग। सो हाउ डू यू रिवाइज दीज थिंग्स? लाइक कर तो लेते हैं, मैंने भी कर लिया, बट हाउ डू यू रिवाइज दीज थिंग्स? So I used to maintain like notes again. So like you should maintain notes, and with each iteration and revision of those notes, just try to make them shorter and shorter. क्योंकि जैसे जैसे तुम बार बार रिवीजन करोगे, तो कुछ चीजें तो दिमाग में ऑटोमेटिकली परमानेंटली फिट हो जाती हैं। Just remove them from the notes. जो चीजें तुम भूल गई थी, just revise those things. And रिविजन तुम जितना फ्रिक्वेंटली करोगे, उसमें उतना ही कम टाइम लगेगा रिवाइज करने में, एंड चीजें ज्यादा याद भी रहेंगी। तो आई यूज टू लाइक डू दिस थिंग कि लाइक वीकेंड पे सिर्फ रिविजन का काम कर लेंगे। लाइक आई विल नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू, आई जस्ट रिवाइज व्हाटएवर आई स्टडी टिल नाउ, सो दैट आई डोंट फॉरगेट एनीथिंग। बिकॉज इंटरव्यूज कैसे होता है कि दे जस्ट सेंड योर ईमेल। लाइक फॉर एग्जांपल टावर रिसर्च के टाइम आई हैड दिस थिंग कि उस टाइम एंड सेमेस्टर एग्जाम्स भी चल रहे थे, and the HR just called me and said कि okay tomorrow is your DSE interview. Now what am I gonna like prepare in the next 24 hours? So like you should be like always interview ready and always have all the skills at your hand, whatever you have practiced so far. थैंक यू दी, इट वाज वेरी हेल्पफुल। Yeah, thank you. and Uh, ma'am, also one thing, कि if someone is not able to answer such some question in an interview, तो कैसे yeah. react करें, मतलब कैसे उसको handle करें उस time? Like it depends on the question कि अगर तुम्हारे पास उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट अगर तुमने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी हो जो मे बी उस क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, यू कैन टेल देम कि ओके आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर टू दिस, बट आई हैव रेड सो एंड सो थिंग्स अबाउट दीज थिंग्स। तो इससे इंटरव्यू को थोड़ा पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास भले इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, बट यू आर फैमिलियर विद द ओवरऑल टॉपिक। तो मतलब ऐसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता है इंजीनियरिंग में, बिकॉज सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा वास्ट होते हैं और इतना वास्ट टॉपिक होता है। तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से कि तुम्हारे पास सब चीजों की रिजिड आंसर हो ही। अगर तुम्हारे पास एक जनरल अवेयरनेस भी होती है उस टॉपिक की, इट्स ऑल्सो गुड इनफ थिंग। और अगर तुम्हारे पास लाइक कोई भी दूर दूर तक आइडिया नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, मे बी यू कैन आस्क मोर कॉन्टेक्स्ट टू दैट क्वेश्चन कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन ठीक से,
Can you elaborate on that? तो उससे maybe you can get some light कि okay they are asking in that particular direction also. And lastly, अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है कि I haven't like read anything about it, so you can just be frank and like honest about it. Tell them. No one is gonna judge you because again, no one is expecting a fresher to know everything. If you are honest and like telling them कि okay, you don't know about this thing and you will read on it after the interview, it's also a positive like work and like ये बेटर है इस चीज से कि तुम कुछ भी अंधेरे में तीर मारो कि ऐसा हुआ वैसा होगा. इससे अच्छा है कि तुम ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लो कि यू डोंट नो अबाउट इट. एंड मैम ऑल्सो वन या मोर थिंग कि आपने फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो थे उसको साथ में प्रिपेयर किया होगा, तो आपने एग्जाम टाइम में या ही कर लिया था या फिर अलग से आपने उसके लिए टाइम निकाला था? देखो आरजीपी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैटर करते हैं जैसे कि ओएस ऊप्स डीबीएमएस वगैरह. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं. तो जो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आरजीपी में भी पूछे जाने हैं और वैसे भी मैटर करेंगे तो उसमें ट्राई करो कि तुम उन्हें ज्यादा पढ़ पाओ और उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर ला पाओ ताकि जो सब्जेक्ट्स तुम कम पढ़ने वाले हो जो कि इंटरव्यू पॉइंट से मैटर नहीं करते तो अगर उनमें कम मार्क्स भी हैं तो ओवरऑल जीपीए मैनेज हो जाए. तो उन सब्जेक्ट्स की जब तुम तैयारी करोगे फॉर इंटरव्यू लेवल तो आरजीपी लेवल की तैयारी तो ऑटोमेटिकली हो जाती है. तो उसमें अलग से तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है. दैट्स वन थिंग. एंड या तो मतलब अगर तुम्हें पढ़ना ही है किसी सब्जेक्ट को इंटरव्यू के लिए तो व्हाई नॉट जस्ट डू इट बिफोर एंड डू इट फॉर आरजीपीवी एंड इंटरव्यू एट द सेम टाइम. सेम टाइम. या ओके, थैंक यू Uh, सो मच. I have a question. यस Like, विशाल. I have done an internship of Android, and I have या also few projects. One of them is launched at Play Store. So, सॉरी व्हाट. I have a few projects in Android, and one of them is deployed at Play Store as well, Google Play Store. ओके. So, how will I ओके. schedule struct the intro of mine for the SD and Android as well? So, like, if you have specific experience in Android development only, so like when we are talking about SW and SD roles, we talk about a more general thing. Okay, you know, you have some experience with JavaScript, you have some experience with Python, you have some experience with Flutter, whatsoever. But if you are only like aligned towards an Android specific role, I think that there are companies like Apple specifically focuses on Android developers for like iOS and Android application, sorry, Swift applications and all. So I think that those will be your strong pursuit companies. Like if you will target Apple, then as for a Android developer profile, then you will have a good chance of getting shortlisted because you have a very specific fine-tuned experience in that domain. So, like shortlisting right companies and right roles also matter because if you are not choosing them right, so eventually resume will not get shortlisted, and then you will be worried about, hey, I know these many things, but my resume is not getting shortlisted. So you should like look for companies which are specifically hiring for like Android developer profile and apply there, and like introduce like all the projects that you have worked on so far, all the internships you have done, एंड लाइक लाइव प्रोजेक्ट्स में यू कैन लाइक मेंशन कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं. इफ यू हैव अ हाई नंबर ऑफ लाइव यूजर्स तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि ओके तुम्हारा प्रोजेक्ट एक्चुअली में लोग यूज कर रहे हैं, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा बनना होगा. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. आई कैन सी वन मोर हैंड. लाइक मेरा या एक्चुअली मैं अभी समझ नहीं पाया. लाइक मोस्ट ऑफ टाइम मेरे साथ क्या होता है कि whenever I interview, I start my intro. या So it gets a lengthy intro. Like firstly, I define my school. Sorry, about my college. Then after my stream. Thereafter, what is my tech domain. Thereafter, I So wait, Vishal, yeah. we should not have like lots of things. Like introduction should be 4-5 lines. इससे ज्यादा अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो सिर्फ तुम ही बोल रहे हो, इंटरव्यूअर नहीं सुनने वाला है. वो सिर्फ स्टार्टिंग की 4-5 लाइन्स पे तो उसका ध्यान होता है. मतलब इन जनरल भी अगर कोई आके तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देगा तो तुम स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें सुनोगे, उसके बाद नहीं सुनोगे तुम. तो तुम्हें सिर्फ 4-5 लाइन्स का इंट्रोडक्शन रखना है. वो 4-5 लाइन्स एकदम रोल स्पेसिफिक होनी चाहिए. अगर तुम्हें कोई एंड्रॉइड के लिए हायर कर रहा है ना तो तुम सिर्फ एंड्रॉइड की स्किल्स बताओ. अगर तुम्हें कोई एंड्रॉइड के लिए हायर कर रहा है तो मुझसे बोलो कि मुझे ये दूसरी स्किल आती है, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा उतना क्योंकि उस रोल के लिए तुम्हें हायर करने आया ही नहीं है ना. या फिर तुम बोलो कि मैं क्लब के कॉलेज के क्लब का पार्ट था तो उससे भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो सिर्फ स्पेसिफिकली इस चीज को रखो कि ठीक है आई एम, मतलब फर्स्ट टाइम तो यही होनी चाहिए कि इस कॉलेज से इस ईयर में इतना जीपीए है. और उसके बाद जस्ट टेल कि आई हैव डन इंटर्नशिप एज एन एंड्रॉइड डेवलपर इन सो एंड सो कंपनीज और ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं.
प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. इफ दे वांट टू नो अबाउट योर प्रोजेक्ट, सो दे विल आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर दिस प्रोजेक्ट, या हाउ डिड यू मेक दैट प्रोजेक्ट, सो व्हाटएवर. तो लाइक यू शुड जस्ट गिव देम अ ब्रीफ इंट्रो, और फिर उसके बाद उन्हें जो भी पता करना होगा, जस्ट लीव ऑन देम कि डू दे वांट अ फॉलो अप ऑन एनी ऑफ दीस स्किल्स और नॉट. One last, like in the intro, do we need to include our strengths, like some apart strengths? I heard from some people. What kind of strengths can you like give me an example? Like I'm good at that particular communication leadership. That is strengths. This is my Uh, weakness. Such these skills can include them if the round is like HR round or something, but like technical rounds, when people are only going to test your technical skills, nothing else matters. I'm telling you, your past experience, your communication skills, like communication skills, they'll like test when you are explaining a DSA problem solving approach or whatnot. But as a introduction में include करने का कोई point नहीं है. Because these are the things that HR judges for them कि okay तुम्हारे अंदर behavioral वाली qualities हैं उस company की या नहीं है. People who are taking technical interviews are only focused on that specific domain. The another one, like whenever I explain some DA solution, like for the DP one, तो उसका explanation बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत tricky भी होता है उसको explain करना each and every उसका कुछ exceptional cases हो सकता it तो it उस just cases comes में with practice, I think. And like you can watch YouTube videos and all ki how people are explaining questions and what approach they are following. And like I learned from there, okay, so you can see like 4 5 videos how people are explaining things, and then just mimic those. It's not like very tough. If you know how to solve question, then explaining the approach, I don't think that it's very tough thing to do if you are a confident individual. Yeah, so I think we are done with that. If there are no other questions, then we can address the questions in comment box. Yeah, Dia. Um, yeah, so now we are having our Q&A session. So you all can ask your questions in the comment box or either by switching on your mic. I think Dia wants to speak something, but she cannot access the mic, I guess. Good evening, ma'am. Yeah, Am I audible? yeah, sure. Ma'am, actually, I want to ask that how you handle language as well as DSA and development. And now we are seeing that new technologies are coming in the market, like AI and IoT and all. So we have to work upon it as well in our period of time that we have before placement. So how I can handle it, being a second year student. So, like, no one expects a fresher to like know it all kind of individual. You just focus on like the technologies that interest you. For example, if you're interested in JavaScript, then you can build a project around JavaScript. So basically, what matters is you should have a good project, which is an end-to-end project. मतलब ऐसा ना हो कि project का front end है, back end नहीं है, कोई API call करना है, but वो सही से call नहीं हो रहा है, तो अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट एकदम ऐसा रेडी है ना कि अगर तुम उसे कल ही डिप्लॉय कर दो तो पीपल कैन यूज इट कंफर्टेबली, तो दिस इज ऑल दैट मैटर्स. और ऐसा नहीं कि अब AIML ट्रेंड हो रहा है तो उसी पे प्रोजेक्ट बनाने को जॉब मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ मिथ कि लोग थोड़ा ट्रेंड में आके फोमो में आ जाते हैं कि अरे सबको AIML आता है, मैं नहीं आता. But it doesn't matter. It's just that you need to have your expertise in some of like any one thing that you pick. It could be AIML, it could be anything else, it could be an ancient technology, whatever you choose. So, ma'am, currently I have started DSA with Java. So, can I Yeah. align it with web development or should I wait for some time? It like depends on you. So like basically first thing though is you should have DSA as your priority. If you think that you can manage your time and do some development stuff parallelly, then you can switch to like learning development for some time and doing DSA for the rest of the time. But if you feel like you cannot manage both things at once, so I'll say that you should just stick to DSA. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. My last one, like Yeah, I applied a lot in the SD intern and all over, and they always yeah. expect like the DSC skill as well some projects. But I never got Yeah. selected. Even my resume round is not get selected. So what actually they expect in terms of Google? You can, Vishal, that's a very specific question. I think I'll have to take a look at your resume and then I'll
maybe able to find some flaws that why is it not getting shortlisted. So, like, you can send your resume to me and we can discuss that after the session sometime later, maybe. We can like discuss more general questions over here, which will be helpful for like all the people that are sitting here. I'm expecting like about the Google, like what specifically Google wants to have in the candidate. There is not Some sort of. there is not an आंसर फॉर दैट. अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज होती तो फिर सब लोग ही वो रेज्यूमे में डाल के शॉर्टलिस्ट हो जाते ना गूगल में. ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट योर इंडिविजुअल एक्सपर्टीज की क्या तुम्हारा रेज्यूमे तुम्हें बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट या फिर स्किल्ड इंजीनियर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है. बट ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज को पॉइंट नहीं कर सकते कि तुम्हारे रेज्यूमे में जावा है तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा या फिर कोई एआईएमएल का प्रोजेक्ट है तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा. ऐसा कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इस चीज का. That's all from us. Thank you. Yeah. Okay, so I guess we can address the questions and comments. Um, so Harsh is saying I'm currently in third year and applied to GSOC 2025. And chances are high of selecting. How can I get good job after it in good companies like Google? So like Google Summer of Code has nothing to do with working at Google. Google Summer of Code is an open source opportunity. And Google specifically says when they are shortlisting you for Google that it has nothing to do with Google as a company. And you cannot claim like you have interned at Google or whatsoever if you're getting shortlisted for that program. But in general, Google do supports open source culture and at a very high intensity. So it doesn't matter what open source program you were part of. You could be part of GSOC, you could be part of Outreach, LFX, whatever. If it is an open source program, then the weightage that it will have in your resume will be like flat for all the resumes that are going as a sort like as an open source type of oriented project. The next question is from Akshay. Do you got your intern role via GSOC like an interest form was given or applied via portal? Akshay, I think you should really check out a bit about GSOC because it's not like an internship program or whatsoever. It has a very different process of hiring, which I think you should like know in detail if you are targeting GSOC for that. So maybe referring to an article or a video online would be helpful. Ayushi Soni is asking me, how did you got your Bloomberg internship? So I applied directly on their career portal without a referral, and I don't know how, but hopefully my resume got shortlisted. And there were as like 3 DSA rounds, system design round, HR round, managerial round, like 6, 7 very hard rounds and finally got the offer. So yeah, it was very challenging. Like if you compare it with the interviews that I gave in other companies, Bloomberg was the toughest one. I think Dia's query we have already addressed. Okay. Pranjal is asking how many questions have you solved till now on various platforms? Do you do CP or not? Pranjal, no, I do not have a CP background. And if we include all the coding platforms, then I guess around 1000 questions I have solved on LeetCode, GFG, Hacker and Code Studio, whatever. So like whenever a company takes interview and they say, okay, we are going to interview on Hacker, so I do some questions there to get familiarized with their UI and whatever. But apart from that, LeetCode is my favorite go-to place for DSA. You can also try GFG. I also like it a lot. Okay, Adarsh is asking, problem solving is core to both AIML and DSA. Adarsh, I do not have a AIML background per se, but I would say that yeah, so like problem solving matters. So like for example, in DSA you have edge cases. If you are doing development also, there will be edge cases like if you will not think about certain scenarios, your application might crash, there might be bugs whatsoever. So problem solving is like a very neutral thing. It's not specific to DSA or development. It's specific to the very core of engineering, no matter what role you are applying for, no matter what work you are doing. Problem solving and thinking about edge cases is one thing that all the software engineers across all profiles do. What is the important subject to focus on starting from first year of college? I think first year should be more about exploring college and having fun. If you'll start your preparation from second semester or second year, it won't be too late for that. But if you are still keen on doing things, then I would say that starting off with the core subjects would not be the right path to choose. You should rather
choose a particular language, whatever might interest you, and start learning that language and doing some easy problem solving on that one, and then you can gradually switch to core subjects when you are in second year. My journey from first year, so like in first year, first semester, though, it was all about fun activities, games, clubs, bunking classes, all the wrong things that shouldn't be done in college. From second year, I started doing some development work. So, like, in my second semester, there was this Flutter workshop which was conducted by my seniors via GDSC. That was the first time that I got to know about GDSC. So, like, Avantika Di had this 1 month long Flutter boot camp, and she like pitched all the juniors in first year to like really participate in it. So, like, I participated and I really liked Flutter in development. So my breakthrough was from there, and then I joined the incubation center and spent most of my time doing stuff there. So there were some startups working and building some cool stuff there. So I went there and explored the like startup ecosystem and whatnot. So that was that thing. And then like from mid second semester, I guess I started off with the DSA things and all. So like I got to know about the step intern program first in the second semester, and I really wanted to get shortlisted in that. So I started off like preparing for DSA and all to get shortlisted in that. Unfortunately, didn't make it there, but like the DSA problem solving things persisted. And then from third year, I started picking up core subjects also. So like I picked up one core subject per semester. So like in third semester, I guess we have OOPS. So I prepared OOPS for interview and for RGPV and for everything at that time. And then in next semester, I guess we have OS and BBMS and things like that. So like I picked up like subjects like which were coming up in the semesters and prepared them for the interview and RGPV both. It helped me maintain my GPA without putting in much effort for RGPV exams. And like parallelly, I was doing the ESA in development on and off. So like if there were some coding rounds of any company or any program that I applied for and I had some faith that I'll most probably get shortlisted in that. So I like prioritized DSA over that. If nothing of importance was coming up, then I was more oriented towards development because it was more interesting thing to do, and DSA was more on the boring side of the page. So that was that. Like, yeah, things went in the similar fashion for all the upcoming semesters. Then I had my interview at Microsoft, which I was rejected in after a few interviews, but it was a good experience for me. I like it was a dream come true. If you get an interview offer, sorry, interview call from an MNC when you are in tier 3 college. So I think I never even thought in my wildest dreams that I'll get the opportunity. But yeah, so like then Microsoft happened, then Bloomberg, Amazon, like there were lots of interviews and they just keep happening without stopping. And yeah, that gave me a lot of motivation to like continue doing all the hard work and efforts to put in. So like yeah, that was that. And then like DSA, though I only stopped doing DSA when I started my internship at Bloomberg. And but I think that till that point I had enough practice with that, so it really didn't matter that I was not able to put in much time for DSA at that point of time. And yeah. So Kanhaiya is asking, while explaining DSA question in interview, what should be the strategies should I follow? How should be the flow of explanation? Really depends on your DSA question. Like, firstly, so you should just explain a very general approach. Like, if you are planning to use a sliding window approach, then why you are doing so. If you are planning on using a binary tree, then why are you choosing that? What will be the complexities, like space and time complexity of using that? And then you should ask your interviewer if they are satisfied with that time and space complexity, or or do they need more optimization. Maybe if you'll not be able to figure out a more optimized approach, they'll give you some hints. You should think in that direction or think about certain edge case and whatsoever. So that's how generally a interview flow goes. You can also check out a lot of mock interviews. Like YouTube is full of mock interviews. You can just check out whatever company you're targeting for, and you'll get a like really nice clarity on that.
I have Okay. one question. Have you ever like gave mock interviews for practicing? Yeah, I have given a lot of mock interviews, and I think they really matter and they are really game changer. So I would strongly recommend, like, if you are appearing for an interview at any MNC for the very first time, at least you have 5, 6 mock interviews before. Only that, there or only then there will be like chances of you getting shortlisted. It's never a thing कि तुम पहली बार try करो इतने सारे लोग compete कर रहे हैं and you will get shortlisted. It's never going to be the case. Okay. Can you tell some platform for mock interviews? Yeah, so like I gave my mock interviews via TalkMate, and I guess I gave some mock interviews via Mento as well. So these were the two platforms, but mostly TalkMate. Like people there are like really active, and there is one more thing. So like what happens is कि if you are like reaching out to people on LinkedIn or whatsoever, there are like a really less chance of getting a reply. क्योंकि मतलब तुम खुद ही सोचो अगर तुम्हारे पास जॉब है एक अच्छी कंपनी में तो तुम लिंक्डइन स्क्रॉल करने क्यों नहीं जाओगे. So if people from that company are there on TopMate and all, so you can send your query there और फिर वो query TopMate वाले उनके WhatsApp पे redirect कर देते हैं. Everyone is there on WhatsApp. Everyone is going to definitely see your query. So the chances of getting a reply is like increases a lot. So like it happens with me also. Like जो भी जूनियर्स मैसेज करते हैं लिंक्डइन पे मे बी अगर बाय फेट आई ओपन लिंक्डइन ऑन दैट डे तो आई रिप्लाई देम मे बी देयर मैसेज वुड लाई देयर फॉर मंथ्स एंड आई नेवर सी देम बट जो भी टॉपमेट के थ्रू मैसेज नहीं आई ऑलवेज रिप्लाई देम बिकॉज आई ऑलवेज गेट देयर मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप. सो लाइक इट रियली मैटर्स कि तुम कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो क्योंकि अगर लोग उस पर एक्टिव हैं तो भी चांस होंगे कि वो तुम्हें रिप्लाई करेंगे भी. एंड आई थिंक कि लिंक्डइन पे इस चीज के चांसेस थोड़े से कम होते हैं comparatively. Yeah. Okay. How much time did you study before in a day before the placement season? There is like nothing placement specific preparation that I did. मतलब जो भी preparation चल रही थी हमेशा से कि डीएसए करना है डेवलपमेंट करना है कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं it was like the same from third semester to till date. Like प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से ही अगर तुम स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ चेंज लाने की जरूरत नहीं है. मतलब अगर तुम प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्लेसमेंट सीजन आने पर कुछ नहीं बदलने वाला है. इट्स जस्ट दैट अभी तक तुम प्रैक्टिस कर रहे थे एंड नाउ यू विल actually appear in interviews and show what you have gained in all these years. Um, what Pranjal is saying, can you please share your resume via screen? Sorry, Pranjal, I actually joined the call via my corporate laptop, so I don't have my resume here. Um, and maybe in some other session, when I'll have my resume handy, we can discuss on that. Okay, Navya, ma'am, on your LinkedIn, there are a lot of skills mentioned. So, how and what approach did you follow to get that skill set by your final year? So Navya, when we are talking about a particular skill set, okay. So for example, if we like pick any technology, let's say, for example, let's say that I have Apache Beam in my LinkedIn profile. तो ये सब जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज होती हैं इसका कुछ ये मतलब नहीं है किसी ने डॉक्यूमेंटेशन खोला अपाचे बीम का महीने 2 महीने तक बैठ के पढ़ा अपाचे बीम के बारे में फिर उसे रिज्यूमे में डाल दिया. द थिंग इज कि तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर तुम इंटर्नशिप्स में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं तो फिर लोग उसे लिंक्डइन पे मेंशन कर देते हैं कि आई हैव वर्कड ऑन दिस आई हैव वर्कड ऑन दैट. उसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे वो टेक्नोलॉजी पूरी ए टू जेड आती है. इट्स जस्ट दैट आई एम फैमिलियर विद दैट आई हैव वर्कड ऑन इट और अगर दोबारा इस पर कभी काम करना हुआ तो आई बी एबल टू रैम्प अप क्विकली बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद दैट. तो जो भी लोग रेज्यूमे मतलब लिंक्डइन पे डालते हैं कि मुझे ये आता है वो आता है ऐसा नहीं कि उन्हें पूरी दुनिया जहाँ की चीजें पता है उस चीज के बारे में. इट्स जस्ट दैट दे हैव वर्कड ऑन दोस थिंग्स. So, like when you will work on like different internships and different projects in your college, तो naturally वो तुम्हारे प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगी स्किल्स कि ठीक है अभी ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें ये चीज यूज होनी है. Let's explore it, let's build a project and then add it on your LinkedIn कि okay, I've worked on it. From which month on-campus placement start in our college? I guess the first company that came was around May, June. I don't really remember, but yeah, like as soon as your third semester exams will end, sorry, third year exams will end,
the companies will start coming up, and like जो starting में companies आती हैं, usually they are the most like good ones, and you should really try to get placed in the starting 1-2 months of the placement season. So that would be really great. Um, I'm currently in third year and applied. Uh, I think that this is going repeated. Which language is preferred in online assessments? There isn't any specific language. Whatever language you are comfortable in, you can ask the interviewer that you would like to code in that language, and interviewer will be like definitely comfortable with you choosing whatever language you want. How did you start open source contributions? So, like, there should be, first of all, there should be a niche skills that you are like comfortable in. For me, it was like I wanted to contribute in some JavaScript oriented organizations, and then you should look out for the open projects and open issues in particular organizations जिनका code base में familiar लग रहा है, and you feel like you are understanding things, you are understanding problems, and you are understanding कि उनका solution क्या होना चाहिए. Then you can reach out to maintainers and sub like propose a solution कि I think कि ये वाला जो issue है वो ऐसे से solve हो सकता है. Do you want me to work on it? And then they will assign the issue to you, and then you can work on solving it. Talk to the maintainers if you find any issues or blockers. And like once your PR is merged, yeah, you are officially an open source contributor. Things are like very easy. It's just that they are a bit overwhelming at start. Being a first year student, what should be my approach towards GSOC 2026? You shouldn't target GSOC per se, but you should like focus on open source contributions. Even if it's not GSOC, maybe you'll get shortlisted to some other open source organization if you will have a good open source profile. So there are definitely programs which are much better than GSOC, which pay you a lot, and the selection chances are also less. Like me personally, I also wanted to get shortlisted for Outreachy, but I didn't get shortlisted there, and eventually got shortlisted for GSOC. So yeah, I think that you should focus on becoming a good open source contributor, and the rest of the things and programs will follow. I'm currently doing a DSA with CPP, and Pushpang sir said that there is very high demand for Java and Python. I don't think that language matter at, as long as you are good with your problem solving skills. You are able to solve the question with good optimization and in limited time. So language ki basis pe you will never get rejected. That's for sure. How to frame a resume? That would be a very lengthy thing to answer, and we can definitely have a session separate on resume building and all. So I'll skip that question. What languages should I use for online assessment and interviews? Like Java is widely okay. Again, OAKL language doesn't matter at all. You can choose whatever language you want as long as you can solve the question. Like language is not going to matter at all. I have my skills in Mernsec, so I'm trying to get an internship. I applied to so many startups. Um, Devansh, maybe we can discuss a bit more concisely on that particular problem, because there might be some problem with your resume or your skill set in for general, so I cannot like really answer it. What projects should be made to make my resume strongest for SG kind of roles? Neutral Army, Uh, can you please switch off your mic? yeah. So there are like not a particular project or not a particular kind of project. As long as all the projects are like end-to-end ready, they are working, they are functioning, they are deployed, and like everything is uh, like if a user want to use your application the next day, is it like user friendly or not? Only those things matter, and what your project and also there is this thing that what I used to do that कि जो भी projects I used to make them for some hackathons maybe, and after making them I used to put it in my resume क्योंकि hackathons के through you get good problems that are actually real life problems that people are facing in tech world or whatsoever. So when you are building projects that are actually solving problems, I think it makes an impact in a way कि ठीक है तुमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बारे में सोचा और उसके ऊपर वर्क किया.
तो मतलब अगर प्रोजेक्ट तुम्हारा कुछ ऐसे स्पॉटिफाई क्लोन है, नेटफ्लिक्स क्लोन है, it's not really solving any problem. It's not really showing your expertise because people know कि ठीक है डलाओ अपनी tutorial, you just saw it and made the projects. तो बस projects उस type के नहीं होने चाहिए कि उसमें तुम्हारी कोई skill highlight ना हो रही हो. Apart from that, if your project is showing कि ठीक है तुम इस particular चीज में बहुत ज़्यादा expert हो और जो तुमने project बनाया है वो इतना easy नहीं है किसी के लिए भी बनाने के लिए, तो that project is a good enough project. Didi, what about tech stack? Like my tech stack is a little niche. It's Flutter, and not a lot of people I know go into that. Uh, Most people it do it one doesn't stack. matter. Like I also started off with Flutter, and most of the projects that I had in beginning were all Flutter projects. But it doesn't matter at as long as your application is good enough, it's deployed and people are using it. It's good. It doesn't matter if it's in Flutter or Kotlin or whatsoever. It's just that the application should not crash. It should not have bugs. And the interface should be user friendly. So these general things matter, and text tech क्या है, language क्या है, these things doesn't matter at all. Okay. In behavioral rounds, do we need to answer honestly or should it be diplomatic? I think it should be a balance of both honesty and diplomacy. मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम honestly आंसर दो और फिर वो आंसर्स कंपनी के पॉलिसीज और विजन्स के साथ मैच ही ना हो रहे हो. एट द सेम टाइम इतने डिप्लोमेटिक आंसर्स भी नहीं होने चाहिए कि इंटरव्यू को लगे कि तुम कुछ ऑनेस्टली नहीं बोल रहे हो, बस शॉर्टलिस्ट होने के लिए जो भी परफेक्ट आंसर्स हैं वो दे रहे हो. तो देयर शुड बी अ फाइन बैलेंस. बिहेवियर राउंड्स में मतलब ऐसा होना चाहिए कि यू जस्ट स्टडी कि तुम्हारे इंटरव्यू का फेस क्या सुन के खुश हो रहा है, वो क्या सुन के खुश नहीं हो रहा है. उस बेसिस पे जस्ट स्विच योर आंसर्स की अगर तुम्हें लग रहा है कि इंटरव्यूअर डाइवर्सिटी हायरिंग वगैरह को सपोर्ट करता है, उस चीज को लेके वो खुश हो रहा है और उसको मतलब सपोर्ट कर रहा है, तो तुम उस बारे में ज्यादा बात कर सकते हो. अगर तुम डाइवर्सिटी हायरिंग के बारे में बात कर रहे हो सडनली जो HR के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाए, एकदम गुस्से में आ जाए, वो तो जस्ट क्लोज दैट टॉपिक, switch on to something else, tell कि okay things should be gender neutral whatsoever. So like behavioral rounds में तो it's all about कि you just need to like check out कि HR क्या चीज सुनना चाहता है और उस वे में ही आंसर को थोड़ा डायरेक्ट करना चाहिए. Where did you do DSA in web dev? So web dev के लिए was not a particular course, but there was this Udemy course by a Jonas which I used to learn JavaScript. और उसके बाद बाकी चीजें I learned by referring the official documentation and all. For DSA, I followed Kunal Kushwaha, Striver, and Love Babbar. So like अलग अलग topics के लिए और अलग अलग questions के लिए I referred all three of them, but yeah, mostly them. So Tanmay Gupta is asking, currently doing DSA with CPP. This too I have answered already. Can you please elaborate on skill set? How do you get to learn? Okay, so as I have mentioned, these things doesn't like show कि तुम्हें कोई tech stack पूरा end to end आता है. It's just that you have worked on it and you have familiarity with that. How do you decide which organization we want to work or get placed in? I think it really depends on what kind of projects you want to work in, what kind of work culture you want, what are your goals after getting into corporate. So, like, just find an organization which matches your specific interests. Where should we learn system design? So Navit, there is this very great book on system design, which is Broking the System Design Interview. You can definitely refer that for system design. Apart from that, there is also this YouTube channel on YouTube channel. I don't really remember. I think it is someone by the name Gaurav. I don't really remember, but yeah, Broking the System Design Interview book is like a really good, great gem to learn system design. I'm in second year, and if I get shortlisted for an internship, you can go for the internship on site, but the college will not give you attendance for that. So your GPA might degrade, but like no one is going to stop you from going anywhere if that's your question. You can definitely join an on-site internship, which was your very Can next you one. please specify the name of the system design book again? Broking the system design interview. I think that's the book. Let me check it real quick. Okay, I think now so many people have asked so many questions, and thank you so much, ma'am. It was great connecting with you, and you have provided us with uh, so much of information. Thank you so much for that.
I would like to end this session with a heartfelt gratitude towards Sanskriti and towards this team. And thank you so much, ma'am, for joining. Sorry, Thank you ma'am, so for much. interruption. Hello. Yes. This is last question. Ma'am, Yeah. actually, I will, I can't stick to any particular technology. When I migrate to any technology, I learn, I can't stick to that. I can hardly work to 1 to 2, 3 or 4 weeks. Then later I feel more on that technology. So I again switch to new technologies like web development, cloud development, and app development. So I can't stick to that particular technology. So any solution for that? Like, what is the reason behind not sticking? Is it like Actually, मतलब कि सब लोग ये ma'am, कर रहे हैं तो वो कर लेते हैं? I feel bored on that particular technology. Like I did development on 3 months ना, so I feel like मैम ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ सब कुछ लगता है मैम कितना ज़्यादा कर लूँ. Like what can I everything can I grasp as soon as possible. या तो आई थिंक कि जैसे हम कोई टेक्स्ट स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान होती हैं एंड वंस वी आर 1 2 months इनटू दैट तो फिर धीरे धीरे टफ कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं एंड वी फील लाइक कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ मे बी दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट फॉर अस वी शुड ट्राई समथिंग न्यू. मैम ऐसा नहीं है कि मैम कि मतलब समझ नहीं आता मैम समझ सब आता है बट ये लगता है कि आई थिंक कितना जल्दी उसको ग्रैब कर लूँ सारा. जैसे अगर स्टिक भी हुआ ना 2 मंथ हुआ ना फिर लगता है और जो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई ना उसको उसको ग्रैब कर लूँ जल्दी से. तो आई थिंक वो तो एक वो होता है कि मतलब तुम्हें थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा और थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा चीज़ों को लेके बिकॉज चीज़ें तो बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं बट यू कैन नेवर मास्टर ऑल दोज. तो और फॉर मी व्हाट हैपेंस इज कि आई डोंट चूज अ टेक्नोलॉजी पर से कि ये चीज़ सीखनी है. आई चूज अ प्रोजेक्ट कि ये बनाना है प्रोजेक्ट या फिर इस हैकाथॉन में पार्ट लेंगे और ये चीज़ करेंगे या फिर इंटर्नशिप में ये चीज़ यूज होनी है और उस बेसिस पे डिसाइड कि ठीक है अब ये चीज़ करना है तो ये चीज़ सीख लेना चाहिए और ये चीज़ करने के लिए उस चीज़ को कितने लेवल तक सीखना है या कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं उस तरह से भी यू कैन कीप योर डेवलपमेंट perspective. So, like you'll have more skills, you'll have more projects, and you'll feel more confident about it, I think. Okay, and thank you. Thank you so much, Sanskriti, for having me Thank here. you The so session much, was Sama. quite long. I Yeah, hope it was helpful and everyone got answers to all the queries that they had. yeah, it is Yeah. very helpful actually, personally for me. The last question from my side. Sorry to have that. It's a Yeah. quick question. Do they really see our code bases like our GitHub repo or like this? Is there any role of our GitHub repo and So yeah, people do check out your the code base. Like, it definitely depends. Like, for example, if you are applying in the startups, people will check out your code base in great detail. Discuss on the projects like for half an hour type of uh, duration, and like you need to have like really good GitHub repository if you are targeting startups. But if you are targeting companies, so they will take a look at your projects, your code base, and all, but not like in that level of depth. like in my project, I have some feature, but it's not working properly, like due to some error or due to my issues or something that. So just I Yeah. wrote it them that I have that features, but actually it's not Okay. working. Okay, even if someone doesn't look at your code base, okay, I'm just telling you if someone is taking a look at your resume and they just pick out that particular line, okay, how did you implement this feature? Did you get this error? Okay, what were the problems that you faced? Or if you were doing this, so for example, if you said, okay, you are doing authentication via JWT tokens, okay, interviewer might ask, why did you choose JWT tokens? How do they actually work? Why did you not choose any other authentication mechanism? तो अगर कोई कोड बेस नहीं भी चेकआउट कर रहा है तुम्हारा तो वो क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है एज लॉन्ग एज थिंग्स आर मेंशन्ड इन योर रेज्यूमे. और इससे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है मतलब अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो इट्स फाइन लोग सोचेंगे ठीक है तुम बाद में सीख लोगे बट नो वन वांट्स अ डिसऑनेस्ट पर्सन टू वर्क विद मतलब अगर टीम में कोई डिसऑनेस्ट इंसान होगा तो दे विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट दैट पर्सन they'll not be able to rely on that person. तो लोग ऐसे लोगों को अपनी टीम में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं. भले किसी को थोड़ा बहुत कम आता हो तो पीपल विल फील लाइक कि ठीक है सिखा देंगे इसे सीख जाएगा ये. बट डिसऑनेस्टी इज वन थिंग कि अगर कोई तुमसे भी कहे कि तुम अपनी टीम में किसी डिसऑनेस्ट इंसान को ले लो तो यू विल नेवर चूज देम नो मैटर व्हाट. तो इसीलिए लोग ऐसे बहुत पुश करते हैं कि लाइक ऑनेस्ट चीजें लिखनी चाहिए रेज्यूमे में एंड थिंग्स लाइक दैट. So that's this thing. Okay. Okay.
Yeah. Yeah. Okay, Thanks. now everyone can DM ma'am on LinkedIn because we are like extended for half an hour, I guess. Yeah, the session was super long. I was so Yeah. proud I was speaking for so long. Thank you so much, everyone. It was really Thank you so great much, interacting with Akriti all of ma'am. you. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank Thank you. you. Thank you, everyone. Uh, Thank you. yeah, thank you. It was nice session. Bye.